Now, I take a privilege to welcome or take the opportunity to welcome our resource person, Mr. Rahul Mohile sir, for our 15 days RUSA sponsored program. Sir is an expert with 17 years of accountancy and commerce, specializing in financial analysis and investment strategies. Sir also runs the YouTube channel called Learn to Earn with RSM, focusing on options trading and stock market insights. Also, Sir is an MBA in finance from Jaro Education Europe, Government Diploma in Cooperation and Accounting. Sir is also pursuing PhD from University of Mumbai, HR College. Sir is also a life member of Indian Academic Researcher Association IARA and life member of Indian Accounting Association IAA. We are honored to have you here, sir. Now, the expected outcomes in this 15 days STP. The students will learn to analyze market data and trends for better investment decisions. They will enhance strategic investment planning and risk management skills. They would identify the emerging investment opportunities in the market, improve their critical thinking on stock performance and market changes, and many more to take away from you, sir. Now, without wasting much time, sir, I would hand over the session to our resource person, Mr. Rahul Mohile, sir. Over to you, sir. Yeah, thank you, ma'am. Am I audible Yes, clearly? Just tell me once. yes, sir. Okay, thank you. So, first of all, I would like to thank the college committee, the principal of the college, uh, Deepika ma'am, Jyoti ma'am, and all the staff members who have arranged this event for the students. And this session or this overall 15 days crash course will basically relate with practical aspects as well as the theory, because this will not be only theory, this will be practical part which we are going to learn. Because normally what happens, whatever we are learning, the same part is the theoretical base, and since we are learning much theory, we are not able to apply that theory in the practical aspects. So I will be also showing you the terminal. I will be also showing you how to analyze a company and how to get with the details of the company, what are the parameters which we will be looking. So this 15 days will be a game changer for all of you if you concentrate. As ma'am has already told you that this will be an hybrid session, and this session will be with online as well as offline mode. So try to note whatever points you think as important, because whatever points I'm going to explain you in the coming 15 days, you should not forget all these points and you should try to implement that, because whatever we are going to learn here, we will implement that practically, because that will help you to understand the practical aspects also. Normally what happens, we learn all the theoretical aspects and we are finding it difficult to apply that in the practical part. So this course will be a practical oriented course, and I assure you, if you give your 100% in this course, there is no other course you can do. कोई भी आपको कोर्स करने की ज़रूरत फ्यूचर में नहीं पड़ेगी इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन and just tell me once the screen is visible to all of you, so that I can start with the presentation and then we can discuss practical aspects also. Screen is visible? Okay, fine. So ma'am has given already the introduction. I will not waste much time in this. Let us move further. These three books I have published related with your stock market journey, and these are the books which you can read on Kindle also. I will share all the details with you. So let us come quickly to the agenda. Let us come quickly to all those points which we are going to study. First of all, we need to understand what kind of points we are going to learn in this 15 days, and that part
I'm going to discuss now. These are my social media handles. You can visit there. Now, first of all, there are a lot of points in this also we will be learning, but I will be major guiding you about what are the important aspects we are going to cover. So first, the agenda is we are going to learn about the basics of stock market. What is the stock market? What are the basics which we need to understand? So that is why I have generated from basics from scratch to the long term investing part, to the swing trading, to the other positional investments and all these parameters also. Number second, we are going to learn about fundamental analysis. What is fundamental analysis? How to study a company, how to read the balance sheet, where we will get all these data, and all these data, whatever I'm going to show you, will be free of cost. Everything will be free, but we need to understand from where we can see all this data, and we will be learning that. That is called fundamental analysis. That means there are n number of companies in the market, and which company to buy, or which company to invest, or which will be the company which we can think of investing, that will be related with fundamental analysis. As a commerce student, as an accounting and finance student, we all know what are the important aspects of balance sheet. Up till now, what we have done, up till now we have just studied the balance sheet. Up till now, what we have done, we have just presented the details of the balance sheet, we presented in the examination and got the marks. But now onwards, we will be learning that what is the important points which you need to see in the balance sheet and find out ki whether this company is a favorable company or not, whether the parameters relate to the favorability of the company or not, what are the parameters which we need to see before investing any company. So normally what happens, if there is any expert, xyz expert we meet, and we ask one simple question to that person that sir, please tell me which company to invest. So after completing all this 15 days program, there will be no need of asking anyone that which company to invest or which company I should buy. You will get the answer. You will have a process. You will have a specific factor that this points we need to understand. This points we need to see before analyzing any of the company, and that is called as fundamental analysis. We are going to learn about it, how to read profit and loss account, how to read balance sheet, how to deal with the cash flow statement, what are the important aspects of the cash flow statement. Everything I'm going to teach you in much detail. So let's concentrate and just try to note whatever I'm telling you. That is most important for your upcoming days to come. Then the next part which we are going to study is called as technical analysis. Now, since as a commerce student we have an advantage, we have an advantage that we know balance sheet, we know P&L, we know all the aspects of the profit and loss, we all know this, right? But what if a person is not knowing anything? What if a person is not knowing about how to read the balance sheet? So people are shifting towards the technical analysis, and technical analysis is one kind of study. It is basically a study of the emotions of the people, and that is been reflected on the candlesticks. So we will be learning the candlesticks, the exact candlesticks I am going to teach you. That will be helpful. Remember students, I am not going to teach you everything, and after completing all this you will be confused whether I should use this or whether I should use this. मुझे ये भी बताया गया, मुझे वो भी बताया गया, अब इसमें से what kind of things I will be using, I will not be telling you that. I will be telling you all those things which I personally use. I will be telling you all those things which will be working in the market, and we will be taking some practical examples also, because if we take the practical examples, your conviction will rise. आपका conviction तभी बढ़ेगा जब आप वो practically चीज़ें काम करती है वो देखोगे. तो that will be the factors which will be analyzing. तो which companies to buy, which companies to invest, which are the favorable companies, whether these companies are favorable or not, what are the parameters, that will be as per the fundamental analysis. And which companies to buy when, that is very important, because किसी भी रेट में आप कोई भी कंपनी अगर बाय करोगे तो वो कंपनी महंगी होगी. एक प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है पीई का, तो महंगी कंपनी बाय करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, आपको महंगी मिलेगी. तो कब बाय करना चाहिए, कितने प्राइस में बाय करना चाहिए, एट व्हाट प्राइस वी कैन एंटर, एट व्हाट price is the best price to enter a company or enter a stock, that we will be learning, and that will be a system which we will be using, and that is called as technical analysis. And there are
different aspects such as trading and investing. So we'll be also learning the difference between trading and investing, what is trading, what is investing, and what is positional trading, what is intraday trading, what is the concept of positional swing trading, and what are the concept related with momentum investing, momentum trading, as well as long term investment. So all these factors we are going to learn. So this will be a combination of everything, and this all small topics are being divided, and all the overall data is been provided to all of you. So this will be the overall agenda which we are going to study in this 15 days to come, and will be related. You will be also given some kind of systems which I am using personally, so that also I will be giving to you, so that you can use that systems practically, and this course can be practically helpful for you. So there are some questions basically before starting, and that is, why stock market the number one? Can we beat all other asset classes, the number second part? And normally it is said that stock market is gambling. It is a gambling part. People gamble over here, people try to make money, people those who want quick money enter in this. But nowadays it is not so. This can we beat all asset classes? Yes, absolutely we can beat all asset classes, because previously people used to invest in fixed deposits, but now we can check the interest percentage rate of the fixed deposits, which normally people used to get more percentage returns in the fixed deposits, though that's why they used to invest in that. But now what has happened, the fixed deposit interest has reduced drastically, and since the people are now shifting their investment to different avenues, so that also we'll be discussing. So can we beat? Yes, we can beat, but we should have a systematic process, we should have a systematic rules, and we should be disciplined. So all these factors which are very important for making money, and that also will be learning. So stock market is gambling? I personally don't think stock market is gambling. Stock market is gambling for those people who don't know anything about the market. People who know about it treat this market as a business. So stock market is not a gambling, stock market is business. So we'll be treating this as a business. First of all, I would like to ask you some questions, so that your conviction on this will be more high. May I know whose photo is this? Can I know whose photo is this? I want your replies in the chat section, so that you also get involved in the afternoon session which I have kept. So can you please tell me whose photo is this? Can anyone reply in the chat? Whose photo is this? May I know from your side? Very good, very good, very good. All of you are replying. Very nice, very nice. Thank you very much. Thank you very much. Yes, yes, yes. He is late Sri Rakesh Junjunwala. He is called as the Warren Buffett of Indian stock market. He has made a lot of money, and his net worth was 49,396 crore, and he has made all the money from Indian stock market only. The most important stock which made a lot of money for him was Titan and Crisil. Two companies made a lot of money, and that was Titan and Crisil. Okay, very nice. You all have knowledge about it. The next person I am going to show you. May I know who is he? कौन है ये? Can anyone tell me? First answer was absolutely right. I just want your interaction also, so that we'll be in a better position to deal with all these aspects. Very good, Yogesh. Very good, Vikas. Very good, very nice. Very nice, very nice. Shri Radhakrishnan Damani. Right? Radhakrishnan Damani. Everyone knows DMart, right? So Radhakrishnan Damani's shareholding value was about 214049 crore. That is US dollar 26 billion US dollars. And in 2024, as per the Force, estimated his net worth to be 20.3 billion US dollars. He has also made a lot of money from the Indian markets. Then he started the business of DMart. So DMart is also a listed stock in the market, and DMart is the stock which people are being interested, and this is the second person who has made a lot of money trading Indian market. Number 3. May I know who is he? You all are very clever students, right? So you have given the 2 answers right. Now let us understand who is the third person. Can anyone tell me? Very good, Krishna. Very good. Very nice, Krishna. Yes. Yes. He is Sri Vijay Kedia. And he is the person
whom you might have seen on Instagram also nowadays is singing a lot of songs related to the investments, and he's more focusing on the long term investments. So I'll be telling you how to do long term investments also, what are the process we can use, because people are using the concept of buy and forget, and if we don't have any system, if we don't have any model with us, then what will happen, we will have stocks such as Yes Bank in our portfolio also, and Yes Bank was trading sometime as it was the stock of Nifty 50, and it was trading at around 400, and now it's trading at around 12, 50, 30, 25 rupees on an average, below 30 only it is been trading. So basic factor is we should be having a system. These three people have made, there are other peoples also, there are other persons also, but these three everyone knows, they have traded, they have made money, and they have been having a process related to their investment patterns. So the most important point is the question which I have asked to you previously, and that was whether stock market is gambling. So people will say, those people who are not knowing, they will say yes it's gambling, because normally everyone tells that only, that stock market is gambling. So it's not gambling, it's a systematic risk driven approach. If we have a systematic risk driven psychology, if we have some kind of models, if we have some kind of systems, if we know how to analyze a stock, if we know how to enter any stock, at what price to enter, at what price to exit, how much quantity to buy, so everything if we know systematically, then it is a calculated risk business. So this is a calculated risk business, it's a pure business. And when we are doing any kind of business, risk is an attached component of it, because unless and until we take risk, we cannot get returns. You have already learned this concept, the more we take risk, the more we get the returns, right? So there are n number of points related to the concept of risk. Now let us understand some kind of basics of the market. I am not going to speak about all this theory thing, because whatever theory I am going to speak, that will be related to your market, and that will be helpful for you, because stock market is basic, the overall the market where normally we purchase shares, we sell the shares, we have primary market, we have secondary market, and we have the IPO concept model which is been introduced, and we have other parameters also. Everybody knows that. Whatever you know, I will not be speaking, just I will be telling you all these basic instructions. But basic factors is that stock market, if we see the stock market, these are the 4 5 points which all of you should know. So a simple example will be taking, we have exchanges where we normally purchase the shares and we sell the shares, right? So NSE, National Stock Exchange, and BSE is Bombay Stock Exchange. Everyone knows the theory. गूगल पे अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसका कुछ भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन गूगल से ले सकते हैं. तो इंडिया में वी आर हैविंग 2 exchanges. One is the National Stock Exchange and another is called as Bombay Stock Exchange. Now National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange both we have in Mumbai only, right? So BSE's major index everyone knows, right? BSE's major index is Sensex. So Sensex is the sensitivity index. So what is the Sensex? Sensex is sensitivity index. It is the top 30 companies of India. So top 30 companies overall data is been reflected in Sensex. And in NSE, that is the National Stock Exchange, we have the index called as Nifty 50, right? Nifty 50, that means India's टॉप 50 कंपनीज. एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से बताओ, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल है क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हमको ज़्यादा फोकस करनी है. नंबर फर्स्ट, व्हाट इज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? इंडिया's top 50 companies will be represented by Nifty 50, and if you see BSE, that is Bombay Stock Exchange, it will be represented by an index called as Sensex, and India's top 30 companies will be reflected in that. And जो इंडिया की 30 कंपनीज है वो ही इंडियाज़ की 50 कंपनीज में भी आती है. तो दोनों जगह पे Reliance is registered in both BSE as well as NSE. Tata's companies are registered in both BSE as well as NSE. Then we have a regulatory body called as SEBI. Everyone knows, Securities and Exchange Board of India. Basically investors को protect करने के लिए बॉडी बनाया है. नए नए रूल्स लाएंगे, नए नए रेगुलेशंस लाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी चीटिंग ना हो. इन्वेस्टर्स, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ चीटिंग विद देम, एंड दैट्स द मेजर रीजन बिहाइंड फॉर्मुलेटिंग अ रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड एज सेबी. एवरीवन नोज दिस.
नेक्स्ट इज CDSL एंड NSDL, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज, जो हमारे डिपॉजिटरीज होते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बेसिकली ये डिपॉजिटरीज करते क्या है, बहुत सिंपल वे पे बताता हूँ। देखो ये डिपॉजिटरीज करते क्या है, आपने जो भी शेयर्स लिए हैं वो एक तिजोरी में सेफ रखे जाएंगे, ठीक है। ये जो तिजोरी होती है, ये जो सेफ होता है, दिस सेफ मतलब CDSL है। CDSL इज डूइंग व्हाट, CDSL इज कीपिंग योर शेयर सेफ विद देम। whenever you sell the shares it will be debited from CDSL account and whenever you purchase the shares तो CDSL के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। CDSL आप एक डिपॉजिटरी बॉडी समझ लो एंड दैट डिपॉजिटरी बॉडी इज लुकिंग आफ्टर ऑल दिस। मतलब जितने भी शेयर्स आप परचेस करेंगे, फर्स्ट यू यूज टू गेट that share certificate. Now we are normally having DMAT and DMAT मतलब अब पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। On a click we will have a buy sell transaction. I will show you how to buy, how to sell. So when I will take a hybrid session, that is the offline session, I will also show you about this कि किस तरीके से एक buy sell transaction आपको करना है, because PPT से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और PPT ऐसा होता है कि दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन हमारा मेन गोल, हमारा मेन पर्पस इस कोर्स के पीछे ये होना चाहिए कि ये सारा कुछ करने के बाद वी शुड बी एबल टू do any transaction. That is my major goal, but that is my major objective, and you should also have a purpose for this only. And these are the 4 aspects. Now in the coming 5 to 10 years the Indian market will create history. There will be a bull market, there will be a growth in the market, there will be a growth in all the industries. And how can this happen? How can this happen? Because this is some kind of data which I have put over here. India's market cap is currently the 5th largest globally, that is 4.5 trillion, and is likely to hit 10 trillion by 2030. And this is all the data which I have taken from Google only. So Google में ये clear कर दिया है कि इंडिया का market capitalization 10 trillion 2030 तक हो सकता है, and we are now in 2024, and see if the market capitalization goes to 10 trillion, then what will be the growth in the stock market? Because देश का ग्रोथ कब होता है, जब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है। इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा तो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, एंड शेयर्स प्राइस विल इंक्रीज, सिमिलरली द मार्केट कैप ऑफ दैट कंपनीज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो बेसिक फैक्टर ये है कि जो US का है दैट इज 44.7 ट्रिलियन, चाइना 9.8 ट्रिलियन, जापान 6 ट्रिलियन, हांगकॉन्ग 4.8 ट्रिलियन, एंड करंटली ahead of India in the market cap race. India is expected to become the 3rd largest economy by 2027. So India is going to be the 3rd largest economy by 2027, and by 2030 it will be reaching at 10 trillion. So what is the major purpose behind showing this data to you? The major purpose is very simple. Now if we see the market is at 26,000 25,000 range, so can you imagine from next 5 to 10 years where will be the market be? You can't even imagine. So that is the major purpose you all should know, and you all are very much lucky that we are part of this. 5 to 10 years down the line we will make a lot of money if we have knowledge. That is very important sentence I'm going to tell you, that if you have knowledge you can be in the right stock. You are in a stock which is not moving and the other stocks are moving, then that will be a problem, because you have not analyzed a company and you have entered a stock and the other stocks is moving, the market is moving, and the investments which we have made is not yielding us good returns. So that is the major purpose. So this is the data which can tell us that next 5 to 10 years down the line we will have a lot of growth in India, and since we will have a lot of growth in India, there will be a lot of growth in the Indian stock market also. Some of the data facts more I would like to share with you. If we see the demat accounts data, in US 55% of the people have demats and 55% of the people are investing in the market. In UK we have 33% of the data, 33% have demats and they are investing in the markets. In China we have 13%. In India we have 3%, but this is now being increased because in the COVID most of the people have their demats, most of the people have opened their demats. That is the major reason. So
see how many people will more open the demats. If more people will open the demat, the benefit will go to which company we have discussed now, only called as CDSL. This is not any buy sell recommendation over here, so don't take it personally. We will, because since there are a lot of strict rules as per SEBI that you cannot guide any person unless and until you are registered. So this is just a educational part which we are discussing. So I'll be taking n number of examples. So those who have demat, do not buy anything, because kindly consult your financial advisor before buying any company. Just we are analyzing that, right? So 3% of the people have demat, and this has been increased to 4 5 10% also. Remaining 80 to 90% people, when they will open the demat, the market will be increasing, and there will be a lot of power of the retail people. Because nowadays, if you see, previously 5 to 10 years down the line, people, the FIIs were playing a lot of role, that is foreign institutional investors were investing in the market, and they if they want to move the market, they will buy in huge quantity. If they want to reduce the market, yeah, fall the market, they goes on selling. And accordingly, what was happening, they had a lot of power because they have big money. But nowadays, lot of mutual funds, lot of people are investing in mutual funds, lot of people are investing in the markets, and people are not now aware about this thing, that this is one kind of investment options available to us, where we can make decent returns. We will be beating the market, because there is a concept of inflation also. If we keep in bank 100 rupees and we are getting 5% returns from bank, or 6% return from bank, the next year the money will be 105 or 106. But the inflation is increasing by more percentage than the returns which we are getting, and that's the reason we actually end up making zero money. So there are other options also available. So if demat is increased, which will be the companies which will get maximum benefits? The broker will get the benefit, the CDSL will get the benefit. As NSDL, why I'm not speaking about NSDL? Because NSDL is not listed in the market. When the NSDL will be listed in the market, that company will also get benefit. So CDSL is getting a benefit, and that is the major reason. If we see the Sensex, I have clearly put the index in one go. So we have this kind of points from the date 1980 Sensex started till now. Sensex has increased, and if we check the Sensex is going, Sensex is the BSC index. Similarly, we can take the example of Nifty also, but Nifty 50, the index is not that much old. Sensex is old index, that's why I have taken the example of Sensex only. And there are n number of events which affects the market. There are n number of foreign events also which affects the market. We will discuss that also in much detail. So normally there are n number of events which are affecting, and that's why market comes down. Then people try to invest in the coming market. Recent was the example of 2020, and that was COVID. So COVID, the market reached at around 6 to 7,000, and from there now we can see the market is at around 25,000 range. It made a high of 26,200, and now it is trading at around 25,000 range. So basic factor is that there will be dips, there will be some kind of falls in the market due to some kind of changes which are taking place. There are a lot of policies are being taking place, a lot of changes take place in the market. There are some aspects related with India, there are some macro aspects also which affects the market, and these all factors, some or the other factors will create some kind of panic in the market, and the fall will come, and then people will try to invest, and then a new high is made. So this is just an example of Sensex which I have put. Now, very important point. After explaining all these factors, you might have been convinced that yes sir, we all are convinced with what you are telling, that we can make a lot of money, that you have also shown us the data. We have also shown us that India will be achieving great heights in coming 5 to 10 years down the line. I am not speaking about it, the data given on the Google is speaking about it. But there are other aspects also which the recent data is been published by SEBI. If you see the published data as per SEBI in 2021-22, the percentage of individuals making losses in the market, 86% and 90.2% gross loss and net loss, if we see this.
So gross loss and net loss. Gross loss, if we see 86%, net loss we can see 90.2%. If we see in the year 2022-23, the gross loss is 86.7 and the net loss is 91.5%. In 2023-24, which is the recent data published by SEBI, and that is 85.1% gross loss and 91.1% is the net loss. Have you seen anything in these 3 years? Yes, more people are making losses in the market. Now, sir, one side you are telling that people can make a lot of money, we can make a lot of money, this is the best options to invest, India will grow in the coming years, and one side you are showing us this data and telling us that gross loss is this much and net loss is this much. Then, sir, you are confusing us. करना क्या है वो बताइए. So what is happening? A lot of people have entered in the market. Lot of people have entered in the market. The reason is very simple. There are only 2 days we require for starting a demat account or making a demat account. Just upload your data and the broker will give you the information, and you will be given the ID password, and you are just starting your demat and start trading. So because of that, people are entering in the market without any kind of knowledge, and since they are not having any knowledge, they are making losses. And one more reason, since there is lot of information available on YouTube, lot of information available on Instagram, and lot of information available on the other websites also, then too people are making losses, because people have not understood only that this is a mind game, and since it is a mind game, you need to have control on your emotions. This is the game of psychology. Even if you have lot of knowledge, even if you know everything, even if you have learned so much by reading thousands of books related with market, then too you can make loss in the market if your mindset is not proper, and that we are going to learn. How to beat all these people. If you want to be in all this the data which is presented, 90%, 91% people are making losses, then imagine out of 100, 91% people are making losses, then remaining 7 to 8% people are only making profit. And since this remaining 7 to 8% people are making profit, what is the mindset of those people that we need to understand? What is the psychology of those people that we need to understand? हमको ये पता चलना चाहिए कि ये जो बाकी के 11% लोग हैं, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्या फॉलो कर रहे हैं जो ये इन 91% लोगों में नहीं है. वो हमें समझना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको. बट पीपल आर डूइंग व्हाट? पीपल आर फॉलोइंग द सेम थिंग विच दिस 91% पीपल आर डूइंग. हम करते क्या है? वी आर लुकिंग यूट्यूब, we are looking information, and the information on the Google, information on YouTube, Instagram reels, and that person is doing some live trading, that person is teaching something, we are following him and we will try to make money from the next day. We put amount in our account and we start trading. After 1 week we blow our account, zero. The reason is very simple. We direct shift to options, that is derivatives product, which is a leverage product, futures and options. And since we are directly shifting our mindset to options, we make loss. That is simple reason. सबको क्विक मनी चाहिए. आज पैसा डालूंगा, आज पैसा एंट्री करूंगा, तो आफ्टरनून में प्रॉफिट हो जाएगा. सबको क्विक पैसा चाहिए, इसीलिए लोगों का पैसा नहीं बन रहा है. बहुत सिंपल रीज़न है. यू शुड नो वॉट इज सूटेबल टू यू, दैट आई विल टीच यू. आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल होगी. देखो, बहुत लोगों का नेचर अलग होता है. पूरा नेचर मार्केट के साथ रिलेट होता है. अगर आप ये सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, आप सोचेंगे मैं भी स्विंग करूँगा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपको सूटेबल ना हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट सूटेबल टू योर माइंड सेट, दैट इज़ नॉट सूटेबल टू योर नेचर, दैट इज़ नॉट सूटेबल विद योर इमोशंस.
because when I was studying this all factors, everyone was telling, when I was reading all those books of Peter Lynch, Warren Buffett, and all these big traders in the market, I was just reading one common thing in all those books, and the one common thing was psychology. Always see that what suits you. That was the major sentence in every book. Focus on psychology, focus on psychology, focus on psychology. But basically I was not exactly knowing what is this psychology. Everyone wants that, just tell us ki what to do, how to enter a stock, which companies to buy, but nobody is concentrating on all these aspects as psychological aspects or emotional aspects, because wherever money is involved, emotions to आएगा ही. And that is the major reason you should be able to control your emotions. How to control that, how to deal with that, that also will be learning. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो हमें ये करना है कि हमें 91% जो लोग लॉस कर रहे हैं उसमें नहीं आना है. So we are not in this 91%. We are in the remaining 9 to 10%, those who are making profit, right? So we should think how to be in that 9%. So there are something we need to follow. There are some rules we need to follow. There is some parameters we need to keep. There are certain process which we need to follow, and all these factors will be related with our 15 days course which we are going to learn. सो हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले कि क्या एक आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या एक आपका ओवरऑल इमोशनल एडजस्टमेंट करने के लिए, इमोशंस को मैनेज करने के लिए कैसे तरीका होना चाहिए. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न. सो इट्स नॉट एन ईजी बिजनेस, इट्स अ रिस्क रिलेटेड बिजनेस, बट इफ यू take calculated risk, then you can make money, but we need to follow a process. So this is the overall data which is shared by SEBI. You can get this data on the Google also, which I have taken over here. तो इसके बाद हम देखते हैं 9 out of 10 equity FNO traders lose money. 84% of them are men, 75% under 40. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, और ये जो भी लोग लॉस कर रहे हैं उसमें से डेटा कहता है कि 84% ऑफ देम आर मेन. दैट मीन्स इफ वी कंपेयर द डेटा, 15% आर फीमेल्स, 15 to 16%, एंड फीमेल्स आर मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट. मेल्स आर लूजिंग इन द मार्केट, females are making money in the market, and that kind of advantage you can get because 84% people are losing of the men. 75% are under the age of 40. मतलब यंग लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं. रीज़न बहुत सिंपल है, मैंने जैसे आपको कहा अभी, क्विक मनी में बहुत लोग इंटरेस्टेड है. एवरी वन वॉन्ट्स क्विक मनी, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी, एंड दे आर लूजिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट. They are making their demat account, they are putting all that investments in that demat and just trying to trade and making more money. They want to make more money. If they have 1 lakh rupees, they want to make more 1 lakh. That means they will make 2 lakh rupees. That is their perspective, that is their thinking. But what is happening? They are losing that 1 lakh also. And these people are under the age of 40. That means young people is losing the money. And this is as per SEBI study. Now, sir, you have done with all these points. You have told us all these points. You have told us that all people are making losses. सर अभी हमको ये बताओ कि exactly हम उस 11% में कैसे आ सकते हैं. हम वो 11% के लोगों में कैसे आ सकते हैं. Are you interested to know all this? Is it interesting? Just want your reply because I have not received any reply from your side. Okay, thank you Vaishnavi. Yes, thank you Pushkar, thank you very much. Thank you. Yes. Thank you Vikas, thank you very much. So what we are going to do, if we want to make loss, then we can follow all these 91% people, right? But if we want to achieve something which this 11% people are making, you are not aware about कि जितना भी पैसा ये 91% लोग खो रहे हैं, उतना सारा पैसा 11% लोग बना रहे हैं. तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये 11% लोग कितना ज़्यादा पैसा बनाते होंगे, राइट? तो क्या चाहिए अब इसके लिए, क्या चाहिए? देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. अगर आप ये स्लाइड समझ गए
इसको प्रैक्टिकली मैं सिखाने वाला हूँ. ये सारी चीज़ें विल बी लर्निंग प्रैक्टिकली ऑल्सो. रिमेंबर दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड. आपका पहला जो सेशन है ना, उसमें आपको एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि ये 15 दिन में मिलने क्या वाला है. देखो ये 15 डेज को अगर आपने ध्यान दे दिया तो आगे आने वाले 30 ईयर्स आपको ये नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल होगा. दिस नॉलेज विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर नेक्स्ट 30 years and you can make career also in this field. There are lot of people now making careers. There are a lot of investment bankers. There are lot of people who are making their careers in this field. But you should have, number one, passion, and number second, interest in this. If you have interest and passion, then you can achieve anything in your life. Number first, right knowledge will bring us in that 11%. ठीक है. People say that knowledge is important. If you have this knowledge, you will be successful. But I usually use a word before knowledge, and that is, knowledge is not important, right knowledge is important. देखो यूट्यूब पे ज्ञान भरा पड़ा है. यूट्यूब पे इतना इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या देखूँ और क्या ना देखूँ. चलो, आई वॉज स्पीकिंग अबाउट दैट राइट नॉलेज विल ब्रिंग अस इन दैट 11%, राइट. सो अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो आप 11% लोगों में आ सकेंगे. अब राइट नॉलेज के साथ देर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. नंबर वन इज यू शुड हैव अ सिस्टम, एंड दिस सिस्टम आई एम गोइंग टू टीच यू. आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा. और रेडीमेड बोला तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, राइट. स्टूडेंट्स एंजॉय. सर शॉर्टकट बताइए. लॉन्ग कट हमेशा पसंद नहीं आता है हमको. तो आई विल टीच यू द राइट सिस्टम. ये जो 11% लोग हैं ना, 11%, वॉट दिस 11% पीपल आर हैविंग? द पीपल आर हैविंग, नंबर वन, दे आर हैविंग राइट नॉलेज, राइट सिस्टम. दे आर हैविंग राइट एंट्री. दैट मीन्स उनको पता है कि कौन से स्टॉक को कब बाय करना चाहिए. दे नो एट वॉट प्राइस they will enter a stock. They know at what price they will exit the stock, and they know that what will be my risk involved in buying this stock. If I am doing entry, how much quantity I need to buy. देखो मैं आपको एक सिंपल एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा. आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ उस एक्सेल शीट में एंट्री करनी है. आपको वो एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली क्वांटिटी कैलकुलेट करके दे देगा. दैट एक्सेल शीट विल डू योर ऑल वर्क. दैट एक्सेल शीट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द क्वांटिटी. this 91% people are not doing. People are doing what, you know? People are if I have 10,000 rupees and I want to invest in XYZ stock, what I will do, 10,000 रुपीज़ का कितना स्टॉक आता है मैं देखूंगा पहले. अरे 10 आता है, चलो ले लो, 10 ले लूँगा. बट दिस 11% विल नॉट buy 10 stocks. They will calculate the quantity. They will calculate as per the risk management sheet, and after calculating as per the risk management sheet, they will buy the quantity. That is the major difference between this 11% people and that loss making people who are making losses in the market. And after making losses in the market, they are moving outside and telling that market is risky. ये तो gambling है, ये तो ऐसा है, ये मेरे से नहीं हो पाया तो तेरे से क्या होगा. And that is the major reason these people are making losses, and SEBI is also telling that these are making losses. These people are making losses. So what we are going to learn? We will learn right system, we will have right entry, we will have right exit, we will have risk management, and the most important aspects of all this 15 days crash course will be your trading psychology. Even if it is an investment, even if it is an trading, I will be teaching you about the long term investment. How do we can enter a stock? क्या आप वो चीज़ सीखना पसंद करेंगे? अगर आपने एक स्टॉक में एंट्री ले ली 100 रुपीज़ में और वो स्टॉक 15,000 रुपीज़ चल रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के बताऊंगा. मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके बताऊंगा कि अगर आप इस प्राइस पे एंट्री लेते
तो देखो अपने सिस्टम में आज वो स्टॉक कहाँ पे है. लोग हमेशा एमआरएफ का एग्जांपल देते, राइट. एमआरएफ का स्टॉक 1 लाख के ऊपर है, एमआरएफ का स्टॉक इतना हो गया उतना हो गया. लेकिन क्या हम ऐसा प्रोसेस नहीं बना सकते जिसमें हमारे पोर्टफोलियो में एमआरएफ हो? आई विल टीच यू दैट, एंड वी ऑल आर गोइंग टू लर्न दिस इन दिस 15 days. Is it interesting, everyone? Up till now, is it interesting? Did you get what I am trying to tell you? Yes, thank you, Yogesh. Thank you very much for your comment. Yes, Pushkar, thank you, everyone. Yes, you should understand basically. Your college has taken a lot of initiative in starting this course, but if I try to help all the students, and from that students this course if you try to implement, then that is much of helpful to you. बिकॉज ये सारा कुछ सीखने के बाद अगर आप प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कर पाए प्रैक्टिकली, देन दैट इज ऑफ यूज फॉर यू, एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट प्रैक्टिकली ऑल्सो. बिकॉज यही मेरा मेजर गोल है इस कोर्स का कि एग्जैक्टली यू शुड बी एबल टू अप्लाई. दिस इज नॉट थियरी, आई रिपीट इट अगेन, दिस इज नॉट थियरी. जो हम यहाँ सीखेंगे उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा भी, सो दैट even if you are new, even if you don't have any knowledge, even if you don't know how to buy sell, even if you don't know how to enter, we will be doing it practically. Okay, तो हम सब कुछ सीखेंगे. तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी will also be an important aspect which we will be discussing in the coming days to come. तो आज हम पूरा ये ओवरऑल एक क्रक्स देख रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या क्या है, और एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आज का टॉपिक है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देखो अभी वेरियस एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सो दैट अब हम हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के बेस पे चले जाए. बिकॉज नॉर्मली व्हाट इज गिवन इन द कोर्स स्ट्रक्चर दैट शुड बी also the part of the days to come, because the course has been designed as per the structure. Now since we were more discussing about कि there are n number of options available with us to do the investments, right? So there are various avenues for investment. People try to invest, some people try to invest in fixed deposit. Some people think नहीं अभी भी मुझे ना comfortable नहीं होता है, मैं ना म्यूचुअल फंड्स में करूँगा SIP. yes, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में SIP बुरा है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ या डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट. From that all avenues of the investments, I personally feel that this investing in stocks will give you more returns. But if you have no knowledge, then it's better to go for mutual funds. Because mutual fund people का हेडेक, हमारा कोई हेडेक नहीं. वो उनको पैसा दे दो, SIP कर लो, वो बाय कर लेंगे अपने बेस पे, यूनिट्स हम तक आ जाएगा, NAV बढ़ते रहेगा, हमको प्रॉफिट होगा. एट द एंड ऑफ द ईयर हम हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे, मार्केट ऊपर रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा, मार्केट नीचे रहेगा तो लॉस रहेगा. फिर म्यूचुअल फंड वाला बोलेगा साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट ही नीचे है तो लॉस है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होएगा. सो म्यूचुअल फंड्स आर नॉट गुड, आई एम नॉट टेलिंग. म्यूचुअल फंड्स आर गुड, पीपल आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो. बट you should be able to know, if you want to buy any stock, which stock to buy, number one, when to buy, number second, at what price to buy, number three. That we should be able to understand, and for that purpose this whole 15 days will help you to understand. We will understand basically as per fundamental analysis. So let us concentrate more on various investing in the stocks. 3-4 important highlighters I have put so that you can understand, right? Number first is, if you have lot of money, where we can have different options available for investing. Number one, we can have investing in stocks, direct investing in stocks. We can have SIP in stocks also. हम स्टॉक में भी SIP कर सकते हैं. लोगों को लगता है SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड में होता है, स्टॉक में भी होता है. मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे जब हम आगे के पॉइंट्स पे जाएंगे. सो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, नंबर फर्स्ट, buying shares in a company makes you a part owner. Everybody knows, distinguish between 12th standard में आपने पढ़ा होगा SP में कि
what is share? Share is a share in the share capital of the company. We become the owner of the company and XYZ blah blah blah. बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है, right? So what is the major factor behind this investment? If you invest in any kind of company, if you invest in any kind of company, then what will happen? Your actual capital which you have invested, if the company is performing good, if the company is making profits, then that will be reflected on the shares prices, the stock prices, and the shares prices go on steadily and slowly, right? That means number one, your share price increase, so your capital is appreciated. Whatever you have invested, say for example you have invested 1 lakh rupees in Tata Motors. There is a company Tata Motors, right? So आपने टाटा मोटर्स इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपया डाला. अब 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद टाटा मोटर्स ने कोई अच्छा ईवी लॉन्च किया, टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस की, टाटा मोटर्स का प्रॉफिट बढ़ा, टाटा मोटर का सेल बढ़ गया, एंड व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? द शेयर्स प्राइसेस विल गो अप because the company has made a profit and company is performing good, so share prices will rise slowly and steadily. And slowly and steadily your capital will be appreciated. जो आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, the value of that 1 lakh will now become 1,10,000. That means your 10,000 rupees is the profit. 10% you have made on your capital of 1 lakh, and that means 10% returns you have made in 1 year. For example, हम ये सोचते हैं कि एक साल में आपने 10,000 बनाया, तो आपने एक साल में 10,000 बना दिया, आपका कैपिटल 10% से बढ़ गया, एंड नाउ योर कैपिटल इज 1,10,000. 1,10,000 आपका कैपिटल बन चुका है. तो नंबर वन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज व्हाट? योर कैपिटल विल बी अप्रिसिएटेड if you have invested correctly. And number second is you will be given dividend at the end of the year, which is called as final dividend. Company is earning profit, and since company is earning profit, that percentage of profit decided by the company in the AGM, which will be provided to you as dividend. So that is your extra income. वो आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया, नंबर सेकेंड. और नंबर फर्स्ट, आपका कैपिटल भी अप्रिसिएट होते गया, मतलब आपके शेयर्स का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपको डिविडेंड भी मिल रहा है. ये बेनिफिट है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का. लेकिन there is also an important component which will be related with investing in stock, and that is high risk. Because markets are volatile in nature. Volatile मतलब ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वोलेटिलिटी. बेसिक फैक्टर ये है कि वोलेटाइल होता है. तो आपने जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया मार्केट ऊपर था और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, आपको लॉस दिखेगा. लॉस दिखेगा तो एक हार्मोन फियर का, हमको डर लगेगा. अरे हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख जिसका वैल्यू 90,000 हो गया है, एंड दिस विल बी अ प्रॉब्लम एक्चुअली, and that is called as risk. So risk is also involved, because we already know that higher the risk, higher the reward. Lower the risk, lower the reward. So basically those who want more returns, they go for investing in stocks. And since this overall course structure is designed related with stocks, so I will be focusing more on stock, but I will be also telling you the other investment options available. Number second, mutual funds. बहुत लोग कर रहे हैं आज. मार्केट में ऐड भी आती है, 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं. एवरीवन नोज दिस, एंड दे हैव lot of mutual funds coming in the market. Lot of companies are basically having their mutual funds. We have blue chip, we have large cap, we have small cap, we have multi cap, we have flexi cap, we have this, we have that. इतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड है कि पता ही नहीं चलता है किस में इन्वेस्टमेंट करना है. We have balance fund, we have equity fund, we have debt fund, we have this fund, we have that fund. मतलब इतना सारा मेस है कि पता ही नहीं चलता है. फिर किसी ने हमको कहा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करो, तो हमने स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लिया है. ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का ये डेफिनेशन क्या है, कौन से कंपनीज लार्ज कैप में आती है, कौन से कंपनीज मिड कैप में आती है, कौन से कंपनीज स्मॉल कैप में आती है. वो हम डिस्कस करेंगे. हम डिटेल में जाने वाले हर एक स्टेप में. आज एक ओवरऑल एक व्यू आना चाहिए एग्जैक्टली कि ओवरऑल आपका माइंड खुलना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें हम ये 15 डेज में कवर करेंगे. सो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है, and that is mutual funds. So what is this mutual funds? Pool of money from many investors
मैनेज बाय फंड मैनेजर। सिंपल कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का, आप जानते भी होंगे बट सिंपल कंसेप्ट। आई एम नॉट हैविंग एनी नॉलेज, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया। उसमें कुछ लोग SIP करते हैं, कुछ लोग लमसम करते हैं। So I have invested 1 lakh rupees and I have given that 1 lakh rupees to XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी। दैट म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक बंदा होगा जिसको हम कहते हैं फंड मैनेजर, एंड दैट फंड मैनेजर विल कलेक्ट ऑल दोज मनीज। जैसे मैंने 1 लाख रुपीज़ दिया है, देर विल बी अदर पीपल ऑल्सो इन द मार्केट विल बी गिविंग दैर इन्वेस्टमेंट्स, एंड उनके पास एक बड़ा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, एंड दे ट्राई टू इन्वेस्ट दैट मनी इन द मार्केट। They have knowledge, they have good research team, they are expert in the field, they know how to analyze, they know how to do fundamental analysis, they have done analysis on the basis of technicals, they know when to buy, they know when to exit, they know everything। जो वो 11% लोगों को आता है उनको ये सबको आता है। that is why these people are making दिस रिसर्च वर्क, उनका काफ़ी स्ट्रांग है। तो 11% लोगों को जो आता है इन सबको आता है, राइट, ऐसा समझो आप। तो हम क्या सोचते हैं, जाने दो इतना हेडेक कौन लेगा, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं ये म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स, लेट इट बी द हेडेक ऑफ द म्यूचुअल फंड लोग पीपल, कि वो फंड मैनेजर को पैसा दे दो, वो फंड मैनेजर हमारे बेस पे पैसा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ये लोगों का साइकोलॉजी है, एंड दैट इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो हमें नॉलेज नहीं है लेकिन उसको नॉलेज है, तो हम हमारा पैसा उसको देंगे, वो हमारे बेस पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगा तो क्या आप अपने पैसे किसी को देंगे? ऑब्वियसली नॉट। अगर नॉलेज है, कि आपको अगर पता है कि देखो ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये स्टॉक्स एनालाइज करते वक्त हम ROC देखेंगे, ROE देखेंगे, XYZ चीज़ देखेंगे, पैरामीटर्स हमने कुछ बनाए, ऐसा अगर रहेगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर ऐसे हमें पैरामीटर्स पता चले, इफ़ वी नो सच पैरामीटर्स, देन व्हाट विल हैपन, वी विल बी मोर कंफर्टेबल, we will have more conviction, and that is the reason we can go directly to stock investing. So that will be the major purpose behind these all these 15 days, right? So second option also we have mutual funds. So simultaneously we can go for mutual funds also, simultaneously we can go for stocks investing also, and it is obviously said that mutual funds are subject to market risk. प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। ये लास्ट में जो कंडीशन सप्लाई होता है ना, वो बहुत फास्ट पढ़ते हैं, आधी चीज़ें हमको समझ में आती नहीं, लेकिन उसमें भी वो वही बोल रहा है, उसमें भी वो वही चीज़ बोल रहा है, राइट। दैट इज म्यूचुअल फंड। सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल, पूल ऑफ मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स विच हैव ऑलरेडी डिस्कस। बहुत सारे टाइप के रहते हैं, ब्लू चिप रहते हैं, स्मॉल कैप रहते हैं, मिड कैप रहते हैं, वो सारा कुछ रह सकता है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स। थर्ड ऑप्शन कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स, बहुत सालों से चल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज FDs, फिक्स डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट्स एवरीवन नोस, आवर पेरेंट्स हैज डन द फिक्स डिपॉजिट्स ओनली बिकॉज एट दैट टाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट्स वॉज मोर, people used to get more returns, decent returns in the fixed deposit, and they were very much lucky that they used to get 7 9% 10% also returns on fixed deposit at their age that time। तो उनके टाइम पे फिक्स डिपॉजिट्स पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अभी अगर आप देखो तो बैंक की तरफ से द रेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स हैज़ रेड्यूस, राइट। तो ये कम हो चुका है, ये रेड्यूस हो चुका है। तो अगर ये रेड्यूस हो चुका है, दैट इज द रीजन पीपल आर फाइंडिंग डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल आर फाइंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स वेयर पीपल कैन डू इन्वेस्ट एंड मेक अ decent returns on their investment, that is called as ROI, return on investment, and they can make. So usually FDs are we are keeping certain fixed amount in a bank for 1 year, 2 years, 3 years, and then after 1 to 3 years we are getting that much percentage of interest on that. रिस्क इज़ वेरी लेस बिकॉज गारंटेड रिटर्न्स है, 5 to 7% का फिक्स परसेंटेज रखा है, तो रिस्क बहुत कम रहेगा, एंड एवरी वन नोज दैट इफ रिस्क इज लेस, रिटर्न्स आर ऑल्सो लेस। सो दोज हु नॉर्मली गेट अमाउंट, लॉट ऑफ अमाउंट आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा, समझो 1 CR या 2 CR का अमाउंट उनको मिला, तो वो रिस्क लेते नहीं है। वो सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपया मार्केट में रखूँगा, 1 करोड़ रुपया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँगा,
और उससे रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहेगा, भले रिटर्न्स भी ज़्यादा है बट रिस्क भी ज़्यादा है, तो वाई टू टेक दैट मच हेडेक? I will be investing, I will be keeping these funds in bank and I will be getting 5 to 7% and I am happy with that. And I am happy with that. So they are happy because the amount which they are keeping in the bank is more and 5 to 7% एक अच्छा खासा decent amount अगर उनके लिए लग रहा है तो they want to play safe at that age. But since all of you are young now, so you can take more risk compared to those people. So what is the option available to us? We can go with the first and the second option. The third option also I have told you, and that is the different avenues of the investment. Number 3 is called as the fixed deposits, right? Number 4th is bonds. अब ये bonds क्या है? बेसिकली इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट. गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं मार्केट में. मतलब गवर्नमेंट को अगर फॉर एग्जांपल रोड्स बनाने हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रोड बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, रोड बनाने के लिए पैसा जो लग रहा है वो उसके बॉन्ड्स बनाए, बॉन्ड्स इशू कर लिए और हमसे पैसे ले लिए, और वो पैसे हमसे जो ले लिए उससे रोड बनाया और बाद में उधर टोल लगा दिया, और ये जो टोल था उससे भी पैसा आ रहा है, रिकवर हो रहा है. और गवर्नमेंट ने हमको प्रॉमिस किया था कि हाँ, आप जो भी हमको पैसा दोगे उस पैसे के बदले में वी विल बी गिविंग यू फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न ईयरली बेसिस, and that is the fixed interest the government is going to pay us. It can be related to a company also, it can be related to a government also. Basically debentures नाम सुना होगा आपने, सेम कंसेप्ट है, सेम. जैसे 9% डिबेंचर्स, 9% बॉन्ड्स, फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स, रेलवे बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसे आजकल मार्केट में होते हैं. तो इसमें कंपैरेटिवली रिस्क जो होता है वो स्टॉक से थोड़ा कम है, स्टॉक से थोड़ा कम है, बट एफडी से थोड़ा ज़्यादा है. ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत सिंपल है. एफडी में रिस्क ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, आपको इंटरेस्ट फिक्स मिलने वाला है एफडी पे. यू विल बी गेटिंग फिक्स इंटरेस्ट ऑन एफडी 5 to 7%. लेकिन बॉन्ड्स पे आपको मिलता है 9 to 10% के आसपास, 8 to 9% आप पकड़ के चलो, 8 to 9% एंड कभी कभी 10% के आसपास तक भी मिलता है. तो अब अगर आपको एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी थोड़ा एफडी से ज़्यादा होगा. लेकिन स्टॉक्स में आपको रिटर्न मिलता है 20% CAGR, 25% CAGR, 15% CAGR, कभी कभी 50% CAGR. अगर इतना रिटर्न स्टॉक में मिल रहा है, ऑब्वियसली रिटर्न्स ज़्यादा है तो आपका रिस्क भी ज़्यादा है. इफ योर रिस्क इज मोर, योर रिटर्न्स इज मोर, वी ऑल नो दैट. एंड इन केस ऑफ बॉन्ड्स your risk is comparatively less than stocks but little more than FD. that is the major difference. तो ये हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन आता है विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड्स का, राइट. नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोल्ड. अब गोल्ड अगर आप देखेंगे तो दिन ब दिन महंगा हो रहा है एंड पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, एनी फंक्शन वी हैव वी रिक्वायर गोल्ड, राइट. मैरिज के वक्त गोल्ड ज़रूरी है, कुछ भी रेट हो जाए हमको लेना तो पड़ेगा ही. एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न. सम पीपल बाय फिजिकल गोल्ड, सम पीपल बाय डिजिटल गोल्ड, सम पीपल बाय द कॉइन्स, सम पीपल बाय द बार्स, सम पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड. दैट्स वाई दे गो फॉर ETF के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब आगे के कोर्स स्ट्रक्चर में आएगा. ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है और सबसे बेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं लोग इसको. We have ETF called as exchange traded fund and we also have gold mutual funds. So some people want that gold क्या म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट्स करूँगा, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट करूँगा कि लगेगा म्यूचुअल फंड है लेकिन वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, गोल्ड में कर रहा है. तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज ऑल्सो वी हैव. कैपिटल अप्रिसिएट होता है, अगेन द कंसेप्ट इज सेम. If you invest in gold and the prices of the gold rises, your capital will be appreciated. And if you have invested in gold bonds या gold mutual funds, then the appreciation of the value also increases, and with that also you can get some kind of return if you have
इन्वेस्टेड इन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1-2% का इंटरेस्ट भी उसके ऊपर वो लोग देने का ट्राई करते हैं, वो भी मिलता है आपको। लेकिन एक ओवरऑल आपका कैपिटल एप्रिसिएट हो सकता है। गोल्ड एक ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट है, अभी भी हम ऐसे मानते हैं कि गोल्ड रहेगा तो एक अच्छा टाइप का इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें आप डिजिटल गोल्ड में जा सकते हैं। एंड दिस डिजिटल गोल्ड क्या है एक्चुअली, वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं आगे आपको ETF का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, दैट आई विल बी टेलिंग यू। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETF फ्रॉम कंपनीज लाइक निपॉन इंडिया गोल्ड ETF और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। ये दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि दिस टू आर द कंपनीज एंड दिस टू कंपनीज आर इन्वेस्टिंग बेसिकली गोल्ड। निपॉन गोल्ड ETF इज वन काइंड ऑफ कंपनी एंड द अनदर कंपनी इज कॉल्ड एज सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स कंपनी, ठीक है। Next is real estate. Now this is also one kind of investment where people try to invest. रियल इस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और आप सभी को पता है रेट्स जो होते हैं, लैंड इज़ एन असेट विच इज़ ऑलवेज एप्रिसिएटेड, हमने पढ़ा है अकाउंट्स में। लैंड इज़ एन असेट विच इज़ ऑलवेज एप्रिसिएटेड। तो व्हेन यू बाय any real estate, any property, any land, the value obviously increases. So that is also best kind of investments because appreciation काफ़ी ज़्यादा है, जगह तो उतना ही है, लेकिन रेट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। रेट्स क्या होते हैं, रेट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, रेट्स इंक्रीजेस, रेट्स बढ़ते बढ़ते जाएंगे। रियल इस्टेट काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है बिकॉज अगर आपके पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं और आपने अगर कुछ जगह लेके रखी, देन जब आप उस जगह पे कंस्ट्रक्शन भी करोगे और वो रेंट पे दोगे, देन अकॉर्डिंगली आपको रेंटल इनकम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपने आज कुछ जगह ले ली और अगर आप 2 साल 5 साल के बाद भी बेचने जाएंगे, then you will be getting major returns from that. So that is also one kind of different aspects of investment patterns. So there are people who try to invest in the real estate also. तो different avenues of investments का concept है हमारा आज, तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो होता है आप सभी जानते होंगे, टैक्सेशन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बैक लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम होता है। ऑन एन एवरेज हर एक के अकाउंट में से, सैलरी में से PF का पैसा कटता है एंड देन दैट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द PPF अकाउंट। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज इसमें भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इसीलिए है कि सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें फिक्स मिलता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ फैक्टर विच इज़ बिन रिलेटेड। नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम ये भी NPS का भी कंसेप्ट है, जहाँ पे लोग रिटायरमेंट प्लान करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ बिन रिलेटेड with the investment patterns as concerned. Now these are the different aspects, right? This is all theory और मुझे आपको बोर नहीं करना है, तो इसीलिए हम बेसिकली एक प्रैक्टिकल चीज़ को देखते हैं। आज थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, देन उसके बारे में हम कल के सेशन में और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड दैट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेबसाइट। वो आप वेबसाइट का नाम लिख के रखें, उसका ऐप भी है, वी हैव एन ऐप ऑल्सो एंड ऐप इज़ अवेलेबल इन प्ले स्टोर, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ एंड लेट मी ओपन दैट, देन आई विल शेयर द स्क्रीन एंड देन आई विल एक्सप्लेन क्या क्या आपको करना है उसमें। Just give me 2 minutes. Sharing the screen, just wait. Screen visible? Just take one message I want to receive. Screen is visible? Yes, thank you very much. Now, this is a website. We will be learning in much detail in the coming sessions. Just wanted to show you something. We also have a app in the Play Store.
what you have to download it in your mobile phone. The name of the app is Screener. Screener.in is the name of the website, and this is the website which we are going to use for understanding the important aspects of the company, and we are going to know how the company is performing from last 5 to 10 years. We will be analyzing the company on various aspects which we will be learning, and this will be a major task to all of you to understand or to analyze any company which you like. ठीक है, say for example, I want to analyze a company. I want to understand a company called as TCS. TCS is Tata Consultancy Services, right? So this is the company, Tata Consultancy Services. The website is over here. BSc code is over here. NSC code is over here. The recent price is over here. The stock price is trading at 4,151 in the market, right? uh, we will be having a detailed discussion of each and every aspect of this website. Is very important, because when you see this website, the major highlights we will be highlighting, that I'm going to tell you now. But there are many points in this. If you explore it, you'll be able to understand. If you're not able to understand ki what this company is making, right hand side I am highlighting it. Right hand side we can check. This company is Tata Consultancy Services, is the flagship company and a part of Tata Group. It is an IT सर्विस कंपनी. दैट मीन्स ये जो कंपनी है ये IT सर्विस की कंपनी है. हमको पता नहीं है ये कौन सी कंपनी है, तो भी हमें पता चलेगा. अबाउट के सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल you need to see the profit and loss account of TCS. So on the top we have this profit and loss. So when you click this profit and loss, we will have the profit and loss of last 10 years. Amazing work this websites people have done, right? So whenever we want to analyze any company, हम ये सीखेंगे. अभी तक मैंने आपको ये सिखाया ही नहीं है कि कंपनी को एनालाइज कैसे करने का. अभी तक हमने ये सीखा ही नहीं है कि आपको देखना क्या है. वो हम देखने वाले, वो हम सीखने वाले हैं. पहले आप ये समझ लो एग्जैक्टली कि ये screener.in को हम कैसे हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे. बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था कि देर इज़ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब में से हम हमारे फ़ायदे की चीज़ क्या है जो हमें बेनिफिट दे सकती है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेबसाइट which data is relevant for us and which data is not relevant for us. So if you check, we have March 2013's data and latest we have March 2024 data. That means from March 2013 to March 2024, every parameter we can analyze over here. What is the sales, what is the expenses, what is the operating profit, how much operating profit margin they have earned, what is the interest, profit before tax, EPS, dividend payout, everything. Whatever you want, they are ready to give you over here. Then from this what we will be taking, because देखो डेटा बहुत है भाई, लेने का क्या इसमें से, that is the major factor we'll be learning, right? वो हम सीखेंगे, वो उसके आप बारे में टेंशन मत लो आप. नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. इफ़ यू वांट टू सी द बैलेंस शीट, दिस इज द एस्पेक्ट. तो अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना है तो ये बैलेंस शीट का भी डेटा आपके पास अवेलेबल है. एंड विल बी एनालाइजिंग इक्विटी क्या है, रिजर्व्स क्या है, बोरोइंग्स कितना है, अदर लाइबिलिटीज़ है कि नहीं, फिक्स असेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, सब कुछ. उसके साथ अगर आप नीचे जाते हो तो वी ऑल्सो हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट. एवरीबडी नोज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? what is the inflow of cash and what is the outflow of cash, cash flow from the operating activities and cash flow from the investing and financing activities, सब कुछ है यहाँ पे. उसमें से हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमको कौन सा लेना है. Then there are n number of ratios. We all know, we are commerce students, we all know ratio analysis chapter. We know current ratio, we know return on capital employed, we know return on equity capital. इसके पहले तो आप लोगों ने सारे ratios कैलकुलेट करके सीखे थे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा अभी भी कि एक कंपनी में जाके कैसे एनालाइज करना है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हमें ये चेक करना है
कि टीसीएस के साथ आईटी सेक्टर में और कौन सी कंपनीज है उसके साथ, तो हम ये पियर्स वाला ऑप्शन है ऊपर, टीसीएस चार्ट एनालिसिस पियर्स, उसमें हम गए तो सेक्टर इज आईटी सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, लार्ज कैप, देखो सब कंपनीज का नाम। TCS is in the software company, next is Infosys, next is HCL Technologies, next is Wipro, next is LTI Mindtree, next is Tech Mahindra, next is Persistent, and we also have the current market price, we also have the PE ratio which is called price to earning ratio। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी आपको मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंस हम सीखेंगे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस का कंसेप्ट सीखेंगे कि वेदर price to earning ratio is relevant to the company, what is the industry PE, and as compared to industry PE what is the PE of the company, we will be learning, because market में बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग PE के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी महंगा है, ये कंपनी सस्ता है, इसका PE सस्ता है, इसका PE महंगा है, तो ऐसा लोग बहुत बात करते हैं। तो आप वो उनके लैंग्वेज कैसे समझ सकते हो, दैट ऑल्सो विल बी अंडरस्टैंडिंग। So these are the points. We have some pros and cons also of the company. Company is almost debt free, company has good return on equity, ट्रैक रिकॉर्ड दिया है। फिर कॉन्स में दिया है स्टॉक ट्रेडिंग 14.7 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट इधर भी दिया है। एंड वी ऑल्सो हैव द चार्ट ऑफ दिस, तो ये चार्ट मतलब हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, तो टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो विल बी लर्निंग। हम टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट्स भी सीखेंगे कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मार्केट कैप, स्टॉक पी, आरओसी, प्लेज, इंडस्ट्री पी, ये जितना भी पार्ट है इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जितना भी पार्ट है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, take a screenshot of this। Now why we have to take the screenshot, reason is very simple, because I have added new ratios in it. If you open this website, there will be certain default ratios already available, बट वी रिक्वायर ऑल दिस रेशियोज विच आई हैव एडेड। अब आप बोलेंगे सर हमारे इसमें ये सब रेशो नहीं दिख रहा है, हम कैसे ऐड करें? तो फॉर दैट पर्पस इसका स्क्रीनशॉट अगर रहेगा तो आप ऐड कर सकेंगे। मैं बताता हूँ कैसे ऐड करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट रेशियोज, इफ़ यू क्लिक दिस एडिट रेशियोज देयर विल बी एन नंबर ऑफ रेशियोज अवेलेबल। जो भी रेशियो आपको चाहिए उसके ऊपर सिर्फ आपको टिक मार्क करना है, जो भी टिक मार्क करेंगे वो आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ये सारे रेशियोज मैंने इसमें डाले हैं एंड दैट इज़ द रीज़न ये हमारे होम स्क्रीन पे आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो इसीलिए वी नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, दिस इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड, ऑन एप्पल, मैक, सब कुछ पे चलता है। And you also have the app of this screener.in, so kindly download the app, keep in your mobile, log in with your Google, so that even if you don't have laptop or computer with you, you will be able to access the app and analyze the company. If anybody tells me कि XYZ कंपनी बाय करो, तो what will be my process henceforth? आप में से जितने भी लोग ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपके कोई भी फ्रेंड्स ने, आपके कोई भी रिलेटिव्स ने अगर आपको कहा कि बाय दिस कंपनी विल गो इन द कमिंग ईयर्स दिस मच, दिस स्टॉक विल गो 100%, this stock will achieve 200%, do not rely on anyone, do not rely on me also. What we will be doing सब, say for example किसी ने मुझसे कहा यस बैंक बाय करना, अभी 23 रुपीज़ या कुछ चल रहा है, 21 चल रहा है, आगे जाके 50 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी एनालाइजिंग दिस कंपनी। मैंने येस बैंक जैसे डाला, यहाँ पे पूरा येस बैंक का डिटेल आ गया। फिर इसमें क्या स्टडी करना है, क्या नहीं करना है, वो हम सब डिटेल में सीखेंगे। तो दिस इज़ ऑल
the details of Yes Bank. If you see, we have pros and cons. We have pros as well as cons. देखो येस बैंक एक ऐसा कंपनी है, ऐसा बैंक है जिसके कोई भी प्रॉज नहीं है, जिसके कोई भी प्रॉज नहीं है, मतलब कोई बेनिफिट्स वाले पॉइंट इधर एडवांटेजेस है ही नहीं. We all have this disadvantages. And if a company is not having any advantage, and if the company is having n number of disadvantage, will you be investing in such company? Absolutely, the answer will come to you that no, I will not invest. But some of your friends has told us, some of your relatives has told us कि आज इसका भाव 21 रुपये चल रहा है, आगे जाके 50 रुपये होने वाला है, ले लो. क्या आप लेंगे? क्या आप लेंगे? Yes or no? Absolutely no. Right. So basically, this are the free tools which has been available. तो ये सारे फ्री टूल्स है. Anyone has any kind of doubt up till now, just tell me once in the chat section. Is it interesting? We'll be able to learn something new. Yes. Remember, after completing these 15 days, these all details, I'll be coming to take offline session also. आप लास्ट दिन को मुझे बताना कि आपको कैसे लगा. This is the first day, but this will be a mind changer. This will be a game changer, and this will be helpful for you in your upcoming years. So this is the website which you can have a look at. There are other points also. We have ratios also. We have investors also. अब देखो investors बहुत important है. So whenever we are buying any stock, whenever we are purchasing any stock, and we think that whether big peoples are buying that stock or not, whether government is buying that stock, whether foreign institutional investors are buying that stock, whether public is buying that stock. So how can we know this? We can know this by the help of this website only. हमें ये भी डेटा इसी वेबसाइट पे मिलेगा. शेयर होल्डिंग पैटर्न करके एक ऑप्शन है यहाँ पे. देखो, अगर हम ये कंपनी था हमारा जो हमने एनालिसिस पर्पसेस के लिए लिया है, एंड दैट इज यस बैंक, राइट? यस बैंक. अभी यस बैंक में एफआईआई कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया है, दैट वी विल बी लर्निंग. देखो कैसे पता चलेगा कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया है. हम सीधा इन्वेस्टमेंट में गए. इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद देखो 2021 एफआईआई's शेयर वॉज 8.17, फिर 10 हुआ, देन 11, देन 12, देन 23, देन 23, देन 23, देन 23. यहाँ पे चेक करो, सितंबर 22 के बाद, सितंबर 22 के बाद दिसंबर 22 में सीधा एफआईआई ने अपना स्टेक जो है यस बैंक में बढ़ा दिया. अभी क्यों ऐसा हुआ है? रिमेंबर, if you want to make money in the market, always follow the big people. The big people know everything which we are not knowing. They have lot of big softwares, they have research team, they have lot of money so that they can employ such experts who are doing analysis for them. तो ये कुछ कर रहे हैं. देखो एफआई, अभी ये मैं एनालाइज कर सका कि मेरे पास ये डेटा था. एफआई क्या कर रहे हैं? यस बैंक में कंटिन्यू शेयर बढ़ा रहे हैं. देखो यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे थोड़ा 23 का 23 ही है, यहाँ पे 23.79% है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे तो 27 हो गया.
यहाँ पे सितंबर में भी 27% है. दैट इंडिकेट्स कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैज सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस बैंक. There might be something good coming for Yes Bank in the near future. I don't know. But why these people are making investments? Why these people are increasing their stake in Yes Bank? It is a loss-making company now. We have just studied the cons of the Yes Bank. Then what is the reason? DIS देखते हैं. DIS क्या कर रहे हैं? DIS मतलब कौन है? DIS मतलब बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स वाले लोग हैं, वो है DIS. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे आर कॉल्ड एज DIS. जितना भी SIP जाता है म्यूचुअल फंड में, ये DIS होते हैं. ठीक है, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. देखो, सबसे ज़्यादा तो DII का शेयर है 45% से लेके. लेकिन DII धीरे धीरे येस बैंक में अपना शेयर कम कर रहा है. अभी अगर देखा तो DII ने अपना शेयर 38% रखा है, और 2021 में DII का शेयर कितना था? 45% था. दैट मीन्स DII इतना इंटरेस्टेड नहीं है येस बैंक में. येस बैंक में DI is not much interested. Who is much interested? FI is much interested. FI is increasing their stake and DI is reducing their stake. अब ये confusing हो गया. मानेगा किसका? FI का मानू कि DI का मानू? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरामीटर्स, तो वो हम सीखेंगे. ठीक है, वही तो सीखना है हमको 15 दिन में. गवर्नमेंट का स्टेक आपको यहाँ पे मिलेगा. पब्लिक मतलब रिटेल क्लाइंट, हम लोग नॉर्मल पर्सनस. देखो, सब पब्लिक का शेयर कितना है. सब लोग फंसे हैं. जिनके पास सिस्टम नहीं है वो 400 रुपये में येस बैंक लिया है. 400 रुपये का येस बैंक 200 रुपया हुआ तो और लिया है. 200 रुपये का येस बैंक 100 रुपया हुआ तो और लिया है. 100 रुपये का येस बैंक 80 रुपया हुआ तो और लिया है. 80 का 50 हुआ तो और लिया है. 50 का 30 हुआ तो और लिया है. लेते ही रहा एंड देन खुद के सेटिस्फैक्शन को कहा कि 400 रुपये का स्टॉक 50 रुपये में मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है. और डिस्काउंट में मिलने के बाद 50 रुपये का स्टॉक जब 21 रुपीज़ हो गया, तो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए एक टैगलाइन चिपका दिया उसके साथ. एंड दैट टैगलाइन एवरीबडी नोज, दिस इज माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. Everybody is speaking with the same point that Yes Bank is my long term investments. अरे 21 रुपीज़ का Yes Bank चल रहा है. आप 400 रुपये से बाय करते एवरेज करते नीचे आए हो, और आज उसका भाव 21 चल रहा है. एंड यू हैव एन होप दैट इट विल रीच 400 रुपीज़ सम डे. आई डोंट नो व्हेन विल बी दैट डे, बट इफ इट रीचेस, these people will make money. You are getting what I am trying to tell you. इसीलिए आपके पास एक एग्जिट प्लान होना चाहिए. अभिमन्यु के पास एग्जिट प्लान नहीं था, इसके लिए उसकी मौत हो गई. राइट? चक्रव्यूह का स्टोरी आप सभी को पता होगा. एंड वी शुड हैव एन एग्जिट प्लान, एंड दैट विल बी लर्निंग. तो हम वो पढ़ेंगे एग्जिट प्लान कैसे होना चाहिए, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है. फंडामेंटल एस्पेक्ट्स आधे तो आप जानते हैं ऑलरेडी. यू ऑल नो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स इन मच डिटेल. आप सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे इसके, उसमें से एक ट्रायल मैंने आपको दिया है. स्क्रीनर को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कैसे एनालाइज करना है, कौन से एस्पेक्ट्स को देखना है, कौन से पैरामीटर्स को देखना है. और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कुछ रूल्स बनाए, मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए, वही आपको दे दूंगा, वही आप एनालाइज करेंगे. एंड आई गारंटी यू दैट इफ़ यू एनालाइज बाय वॉट एवर सिस्टम विल बी लर्निंग, आप कभी भी ऐसे स्टॉक में फंसेंगे ही नहीं जो स्टॉक लॉस कर रहा है लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो में है. सिंपल लॉजिक है बिजनेस का. कंपनी प्रॉफिट करेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा. कंपनी लॉस कर रहा है तो क्या आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा? और फिर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब गड़बड़, गोलमाल. इज इट क्लियर एवरीवन दिस मच? आर यू ऑल गेटिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Yes, Vikas, thank you very much. Because since we are not able to interact with each other, it should not be a one-way communication. You should be able to understand all this, whatever I'm trying to speak with you. Okay.
and that's the points which we have learned. So screener.in you can use. So before I end for today, most important point I would like to share, I will be teaching you everything, we will be learning everything. जिस जो मैंने पहले भी कहा, this will be the quote which I will be expecting from all of you on the last day, that I will be asking you that मैंने आपको फर्स्ट सेशन में कुछ दिखाया था, उसका इम्पोर्टेंस लास्ट सेशन में आपको समझ में आएगा. And that is, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. So again I repeat, whatever is favorable to you, whatever is adjusting related to your mind, whatever is suiting to your emotions, whatever suits you, whatever you think that yeah ये मैं कर सकता हूँ, वही आपको करना है. आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है जो आपके माइंडसेट के साथ एडजस्ट नहीं होगी. दिस इज़ द कोट given by Bruce Lee. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. That means one point, one system, one method, one process we will be using, and we are going to use one system and try to follow that system with discipline. I assure you that you will make money and you will be among that 11% which we all want to be. The reason is very simple, people are shifting from here and there. आज यूट्यूब पे ये चैनल दिखा, कल उसका देखा, कल परसों का देखा, कल तीसरा देखा, कल किसका देखा, एंड वी आर मेकिंग आर सिस्टम्स बट वी आर नॉट फॉलोइंग आर द सिस्टम्स. We will tell ourselves that we will be doing this, but when we practically implement, we are not doing that. And that is the reason, and that is the problem. I hope today's session was interesting. You got a basic idea about what we are going to learn in the coming days to come. Everyone just wanted your feedback, that so that we will be able to continue with much more detail. And सारी चीज़ें पढ़ेंगे लास्ट तक 15 दिन के बाद. यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद ऑल दिस एस्पेक्ट्स, एंड आई एश्योर यू दैट आपको इसके बाद और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे चल रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है.